Hello, friends. Welcome to UPSC Wallah. This is Sonia Ahuja, and today we are going to learn India and its neighbors. In the last lecture, we had to hurry in the last few slides, and I was thinking that if we can go through them again in this lecture, because they were of really, you know, they were really important from what we are trying to learn, and also that they will we were talking about South China Sea issues and security issues of India with respect to China. And another reason I wanted to continue with that is because it will seep into what we're going to study next, which is India and Nepal. So again, I would like to give a disclaimer. These lectures are not meant to be about India and Nepal relationship in its entirety. It is simply to focus on the security aspect of India's national security with respect to China mainly, and otherwise also on a larger scale also. And we are focusing on India's relationship with its neighboring countries with a keyhole view of one or two issues, and majorly those issues are related to border and politics, right? So please do not take this as a complete lecture on India Nepal issues or India China issues. It is from the perspective of what is happening right now. These are very current issues, and these are primarily based on what is in discussion right now in news in last 1 year, and it is to focus on the security issues and questions that will come from that sections in prelims or in G2 GS2 or 3, and so please understand that this is from one aspect of it. We'll move on quickly. So what are the topics that we are going to cover today? First, we are going to do a little bit of recap of China, and then we are going to talk about these three countries. So if you remember our first class in India and its neighbor, I had made a chronological list of all the nations that are India's neighbors with decreasing order of the boundary they share. So we are still following that. That's why we started with Bangladesh, because Bangladesh has the longest border with India. Then we moved on to Pakistan, China, and then now we are going to move to Nepal, Bhutan, and Myanmar respectively. This is in a decreasing order of the land boundary that we share with these countries. Okay, then we're going to talk about India and Nepal's relationship. We're going to talk a little bit historically also, a little bit culturally and politically also, कि क्या रिश्ते रहे हैं हमारे नेपाल के साथ में. Then we are going to talk about majorly about Kala Pani and the security concerns that comes with our relationship with China. ठीक है, so let's move on. So in the last lecture we discussed about China, India, Pakistan, and India, China, and we were talking about majorly what were the reasons why China seemed to be in constant struggle with its neighboring countries with respect to land issues or maritime issues. तो जो हमने नोटिस किया वो ये किया कि चाइना की आइडियोलॉजी ही ऐसी है कि बिकॉज ऑफ द सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड बिकॉज ऑफ how it is perceived and what its goal is in the larger scheme of international politics, geopolitics, it is constantly trying to create a name for itself. And in that endeavor, it is almost in dispute with all neighboring countries, whether it is maritime border or actual land border. So one of the main issues that has been discussed in that is South China Sea, and we're going to quickly go through why South China Sea is important and why does China want it so much. Because one, it is the connecting link between Indian Ocean and the Pacific Ocean. So this is where, according to I think United Nations Conference on Trade and Development, 1/3 of the global trade
goes through this region. Okay, and as we discussed in the last class, China wants to have a China's interests are becoming the strongest country with the most power and influence, and the only way they feel that they can achieve that is through economic dominance. So in that endeavor, what China is trying to do is trying to control the waterways, control the seaways that has the most you know ट्रेड गोइंग थ्रू इट. आप इस तरीके से समझिए कि अगर किसी कंट्री का पूरा इम्पोर्टेंस उसके ट्रेड पे डिपेंड करता है, उसके इकोनॉमिक रिलेशंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि पैसा है तो इन्फ्लुएंस है तो पावर है, और पावर इज देयर गोल. तो वो चाहेगा ना कि जिस रास्ते से मेरा सबसे ज़्यादा ट्रेड जाता है वो मेरे कंट्रोल में हो, क्योंकि अगर आज के टाइम में किसी भी देश को, चाइना को अगर हर्ट करना है सिक्योरिटी वाइज, तो वो क्या करेगा, उसकी दुखती नब्ज पे हाथ रख देगा. व्हाट इज़ दैट दुखती नब्ज? ट्रेड. एंड वेयर डज 1/3 ऑफ द ग्लोबल ट्रेड गोज फ्रॉम साउथ चाइना सी. सो एक अगर आप चाइनीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो साउथ चाइना सी में चाइना क्या कर रहा है, वो अपनी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, जो मेन सोर्स ऑफ पावर और इन्फ्लुएंस है, उसको सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे पता है उसका सारा ट्रेड यहाँ से जाता है. तो इट वॉन्ट्स टू मेक श्योर दैट लैंड, दैट वाटर एरियाज, वाटरवेज एंड दैट एरिया इज कंट्रोल्ड बाय China, so that in future if a country is at war with China, they will be not able to affect Chinese economy as much as they can now, with the idea that this is an international water. And आप देखोगे now this concept also connects why China is trying to create that land route, जो silk route re-establish करने की कोशिश कर रहे हैं, which is going via पाकिस्तान एंड टू ग्वादर पोर्ट एंड सो ऑन. तो आप देखोगे सब तरीके से अगर इस एरिया को कंट्रोल कर लेता है कोई और नेशन, तो चाइना इज क्रिएटिंग अदर वेज ऑल्सो कि कहीं से हमारा ट्रेड ना रुक जाए बस, है ना. सो इट्स प्रोटेक्टिंग इट्स रोड्स, इट्स प्रोटेक्टिंग नॉट इट्स रोड, इट्स प्रोटेक्टिंग द रोड्स दैट go through protecting the areas through which its own trade goes through. So from that aspect you understand कि वो इतना क्यों कोशिश कर रहा है, even though it's wrong. देखो ये सही नहीं है, and we are not the moral compass here, but ये सही भी नहीं है, because एक रूल्स और रेगुलेशंस है इंटरनेशनल वर्ल्ड के, और वो ये कहता है कि आपकी टेरिटरी से 200 किलोमीटर दूर तक ही आपका वाटर है, उसके अलावा एवरीथिंग एल्स इज इंटरनेशनल वाटर. एंड टेक्निकली China is doing wrong because by invading other countries' land and water areas. However, from Chinese point of view, you understand कि वो क्यों कर रहे हैं. सही नहीं है, but समझ में आता है कि क्यों कर रहे हैं. ठीक है. Now, conflict क्या है? Conflict बस इतना है कि China claims that जो South China Sea है, including the Paracel Islands, वो उसके हैं. सो दीज आर, अच्छा, वन ऑफ द थिंग्स दैट हैज़ ऑलवेज बीन अ कंटेंशन इन मैरीटाइम डिस्प्यूट्स इज, जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी जो लैंड है उससे 200 किलोमीटर दूर तक आपका खुद का वे होता है, खुद का वाटर होता है, और उसके बाद इंटरनेशनल वाटर चालू जाते हैं. और अगर दो कंट्रीज़ के आइलैंड पास में है तो एक मीडियम लाइन होती है, दोनों के बीच में एक मीन लाइन क्रिएट की जाती है, उसके इस तरफ का पानी इनका, इस तरफ का है, जैसे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है या इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि इतना डिस्टेंस नहीं है. अब प्रॉब्लम, मोस्ट ऑफ द डिस्प्यूट जो पानी में होते हैं, दे हैपन बिकॉज द सेम लॉ अप्लाइज टू आइलैंड्स ऑल्सो. सो क्या होता है कि जितना आगे तक आपके आइलैंड है, अब जैसे सपोज करो ये चाइना है, तो यहाँ पे ऑफकोर्स उनका जो एरिया है वो इतना होगा, राइट, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ. मैं दूसरा कॉन्ट्रास्टिंग कलर यूज़ कर लेती हूँ. इतना होगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद तो सारा दूसरी कंट्रीज़ का हो जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे वियतनाम है एंड कंबोडिया है. तो अब ऑफ कोर्स चाइना कैन ओनली हैव दिस मच लैंड, बट अगर यहाँ पे 2-3 आइलैंड हैं एंड चाइना उनको कंट्रोल कर दे, तो सडनली फ्रॉम दिस इट इज़ दिस. फ्रॉम, अगर यहाँ पे कोई 2-3 आइलैंड है एंड इफ चाइना सेज दैट इट कंट्रोल्स इट, तो देन दिस ऑल्सो बिकम्स चाइनाज पार्ट, बिकॉज उन हर आइलैंड के 200 किलोमीटर के एरिया में दैट बिकम्स चाइनाज लैंड. सो दिस इज़ व्हाट द की कंटेंशन इज. देयर आर पार्सल आइलैंड्स है और चाइना उस पर क्लेम कर रहा है
Taiwan, and these are not just few or one or two islands. This is a group of, it's an archipelago, a group of islands. And Taiwan, Philippines, Brunei, Malaysia, and Vietnam also claim the parts of this region because they are valuable oil and gas deposit. अब एक तो वैसे भी दूसरी कंट्रीज बोल रही है कि नहीं ये हमारा इसमें क्लेम है, बट वो इतने कोई बहुत बड़े आइलैंड नहीं है, इतने इंपॉर्टेंस के नहीं है फ्रॉम लाइक फ्रॉम लैंड मास पॉइंट ऑफ व्यू, कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई कम्युनिटी है, कोई बहुत ज़्यादा लैंड एरिया है, बट फिर भी इतनी लड़ाई इन कंट्रीज़ के बीच में इसलिए होती है बिकॉज इट इज़ सस्पेक्टेड दैट these areas have valuable oil and gas deposit. तो अब गैस और हमें पता है ऑयल तो सबको चाहिए, तो जिस भी रीजन में जहाँ पे भी कैसे से हम मजाक उड़ाते हैं यूएस का कि वेन एवर एनी कंट्री फाइंड्स ऑयल USA comes to give freedom. So of course this is not just America's thing. All countries try to keep strong hold to region which it finds have a lot of valuable resources. So अब ये दूसरी कंट्रीज भी बोल रही है कि हमारा लैंड है. अब हुआ ये कि यूएस वॉरशिप जो है वो कर रही थी सैर, ठीक है, इंटरनेशनल वाटर में, और एंड चाइनीज़ गवर्नमेंट बोल रही थी कि ये हमारा पानी है, दिस इज़ आर वाटर एरिया, एंड यू आर एंटरिंग आर वाटरवेज विदाउट परमिशन. एंड यूएस वाज लाइक कि नहीं, ये आपका एरिया है नहीं, ये तो इंटरनेशनल वाटर है, हम तो ऐसे सैर कर रहे थे देखने के लिए, टू मेक श्योर दैट इट्स सेफ, क्योंकि यूएस ने तो ले रखा है ना पूरे ग्लोब का कि हम सिक्योरिटी क्रिएट करेंगे. तो यूएस वाज सेइंग कि हम जा रहे थे बस जस्ट टू डू अ रेगुलर विजिट टू सी वेदर द इंटरनेशनल वाटर आर फ्री for usage, and just doing our thing. And Chinese government was like, no, you were in our waters without taking our permission, this is an act of interference. And this is where sort of the main contention came between them. US has argued that such exercises are in line with international law, कि इंटरनेशनल लॉ परमिट करता है कि कोई भी कंट्री इंटरनेशनल वाटर्स में जा सकती है और कुछ भी मतलब टेस्टिंग कर सकती है या फिर एक्सरसाइजेज कर सकती है. एंड इट ऑल्सो हैज़ द राइट टू डिफेंड द राइट टू पैसेज, ठीक है, कि राइट टू पैसेज को डिफेंड करने के लिए अगर इस टाइप की एक्सरसाइजेज करना चाहती है कोई कंट्री तो वो कर सकती है. एंड चाइना इज़ लाइक नहीं, ये हमारी टेरिटरी, हमारा वाटरवेज है, आप क्या कर रहे हो इसमें, ठीक है. सो मूविंग ऑन, दिस इज़ बेसिकली द मेन इशू. नाउ it's just that and the fact that दोनों कंट्रीज़ को लगता है कि उनका हक है और दोनों कंट्रीज़ ट्राई कर रही है कि वो उस एरिया को जितना हो सके कंट्रोल कर सके. चाइना इज़ ट्राइंग टू मेक श्योर दैट जितना ज़्यादा साउथ चाइना सी पे उनका कंट्रोल रहेगा, मिलिट्री रहेगी, उतना उनके लिए अच्छा है, ताकि फ्यूचर में कोई उन्हें पे अटैक नहीं कर पाएगा. और यूएस इज़ डूइंग व्हाट यूएस डज, विच इज़ trying to make sure that everything is done well, everything is open as per international law. I mean, we are not going to go into the depth of how many times US itself does not respect the international laws, but in this case here, from India's point of view and from international laws point of view, we see that US is not doing anything wrong. बट ऐसा नहीं है कि वो दूसरी जगहों पे नहीं करती है. सो एक कंपैरिजन में इट्स सॉर्ट ऑफ साउंड्स वेरी शैलो, बट वी आर गोइंग टू मूव ऑन फ्रॉम. दिस इज एग्जैक्टली इट, दैट्स ऑल अबाउट साउथ चाइना सी. नाउ वी वांट टू टॉक अबाउट चाइनीज़ ह्यूमन राइट वायलेशन इन द नेम ऑफ कंट्रोल ऑफ टेररिज्म. तो एक अग्रीमेंट सॉर्ट ऑफ एक MOU सॉर्ट ऑफ साइन हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में. एंड बेसिकली 2001 टेररिस्ट अटैक जो हुए थे US पे, ट्विन टावर, उसके बाद से देयर हैज़ बीन दिस इमेंस drive to control terrorism, and China also joined it, even though there has not been a lot of terrorist activity happening in China. तो क्या वहाँ पे हो रहा है essentially is there's a small हमने जब टेनेंट्स पढ़े थे चाइनीज़ आइडियोलॉजी के, तो उसमें हमने एक चीज़ नोटिस करी थी कि चाइना हैज़ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वी, देयर इज़ नो आई, इट्स ऑल वी. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंट्रोल ओवर
personal life of people. And when it comes to that, there's also a lot of control on religion. So the north west region of China, it is essentially where Kazakhstan or us area ke borders padte hain China mein, and there is a lot of there in that region, Xinjiang region bolte hain, there is a influence, there's a huge population of ethnic minorities which are of Muslim descent, and which follow Islam. And what China has essentially done is that in the name of curbing terrorism, it has brutalized, and almost to the point of, we can compare what China is doing there with what has happened in Germany. They have violated every human right, that everything that we have established in the international law as something that we should respect our citizen people in that matter. They have completely done everything that they can to curb that minority in the name of terrorism. And and it is almost like terrorism जो US ने ये बनाया कि हम we are fighting against terrorism, almost bandwagon करा है China ने to that concept, just to in the name of terrorism it is controlling a minority. So I think you should read about this. In the last class I also said you should read about this article by Nicola Newson in the House of Lords, published in 14 November 2022, and it talks about how the Chinese government has done unlawful killings, detention, forced disappearances, torture, conversions, okay, making Muslim ethnic groups eat pork, sort of trying to make them into not kill their identity, kill their independent identity, and make them into this larger Chinese nation where they don't have an independent line and everyone is just same. So there has been unlawful surveillance, there has been interference with privacy, restriction on internet freedom, free expression of media, reports of physical attacks on journalists, lawyers, writers, bloggers, descendants, and their family members. So basically anyone who is saying anything against it was sacked, and they have done pretty much everything from like torturing them and converting their religion to killing them. They've done everything, even forced labor and slavery. So there have been these camps where people are sent and their labor is exploited and they're not paid anything. These are just almost like almost pretty similar to Auschwitz in that matter. So read about this, and this is coming from the US State Department's 2021 report on human rights in China, published in April 2022, where credible reports of significant human right issues have been noticed. So this becomes important because again, we are talking about what all things, if you put in perspective what all things China is doing, you can see where the bigger aim is. So because it is so important for China to create that homogeneous identity of we the Chinese people, that it would not take anyone who is not that, and they would do everything possible to curb it. And they also try to make sure कि ये news बाहर ना निकले. So they will curb any voices that talk against it. They would suppress media, social media, everything, to make sure no one comes to know what's happening. And US has been on their trail, and international community also in generally on their tail about this. So Taiwan के साथ क्या problem है? China has held a biggest ever show of military force and air force in and around Taiwan. तो China ने क्या किया, as countries do, जब भी वो अपनी military exercises practices करती हैं, तो what China did was it did this massive show of military force and air in and around Taiwan, है ना? And including firing of including firing of ballistic missiles. ठीक है? So and again we know ballistic missile की जब भी बात आती है तो we talk about North Korea, because वो हमेशा North Korea is always trying to intimidate US with. So in a weird nutshell, ballistic missile practice has become this show of if we want we can destroy you sort of. So the military exercise was followed by a visit of Nancy Pelosi, the Speaker of Congress in US, and उसके बाद China
जो basically China is saying that Taiwan is a breakaway province, that it was at some point China's part, but now it has, you know, separated over the, you know, hundreds of years of occupation, and now it is time that we reunite Taiwan. And you have to understand, Taiwan is very different from mainland China. Mainland China is communist. Taiwan is extremely democratic and a very different culture and political place. And they have obviously established that they are independent. And after what happened in Hong Kong, and how China went about suppressing what happened in Tibet, Taiwan, being a very small country very near to China, is of course freaked out about what's happening. And of course President Xi said that reunification hona chahiye Taiwan ka, and if they have to use force, they will use force. That's what they're saying, कि अगर हमें force use करना पड़ा तो हम करेंगे, but ये है कि Taiwan is part of China. And Taiwan is saying that it is a very different country with different cultural and political established identity and constitution and democracy with elected leaders, and it is not part of China and it will never become part of China. So this is the main conflict कि वो ये कोई नई चीज़ नहीं है. Again, we have seen China do this over and over and over again. With and we now also understand that now that we have discussed the ideology part of Chinese, you know, country's ideology on how it functions or what is its aim, we understand of course it's going to do it. It's trying to control as much area as it can. And also Taiwan becomes strategically a weak point for China because of its proximity to US or international world in general. That's why, I mean, we have all seen presidents traveling to other countries, but Speaker of the House Nancy Pelosi, why is she visiting? Like, it's a show of we are with US, right? And it threatens China's security when a country so near. This is Cuba all over again. Essentially, what happened between US and Russia and Cuba is what they think might happen in Taiwan between US and China, and they don't want it. So they want to, you know, take over that land pehle se hi, before something happens. So China claims that अच्छा ताइवान कॉन्फ्लिक्ट से ही कंटिन्यू करते हैं कि जैसे जैसा ताइवान में हो रहा है, जैसा हांगकांग में हुआ है, वैसे ही ऑफ कोर्स इंडिया के साथ भी चाइना के रिलेशनशिप्स इतने अच्छे नहीं हैं बॉर्डर को लेकर. इट हैज़ कॉन्स्टेंटली वीव सीन देयर आर 3 मेन एरियाज वेयर इंडिया एंड China meet, and all 3 areas have had issues. We have had wars with China. So one of the contention between India and China is that there's some 9,000 square kilometer of Arunachal Pradesh, which is the entire state. China claims that it's our territory, and sometimes they also call it calls it Zangnang or South Tibet. कि ये जो है, and they call it like so called the territory of Arunachal Pradesh. Actually they're saying कि हमारा ही है. So Chinese maps show Arunachal Pradesh as part of China, and sometimes refers to it as so-called Andhra Pradesh. Sorry, what am I saying? Sorry. So coming back, it has जो Chinese map है उस पे कई बार चाइना बोलता शो करता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो एक नया चाइनीज़ नेम दिया है जंगनन, एंड उसको कई बार साउथ तिब्बत बोल के और सो कॉल्ड स्टेट ऑफ अरुणाचल बोल के उसको अपने मैप में दिखाया गया है. एंड एज पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी it sends military and builds illegal roads, bridges and other things slowly to claim the area. तो वो क्या कर रहा है धीरे धीरे. So it's not outward, ऐसा नहीं है कि लड़ रहे हैं उस लैंड को लेकर, बट धीरे 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 1 inch at a time trying to control that area by, you know, मैप में डाल दिया आपने, फिर उसको एक अलग नाम दे दिया, फिर उसको हिस्टोरिकली बता दिया कि ये नो हमारे ही बड़े वाले एरिया का हिस्सा है. फिर स्लोली उस पर मतलब लड़ नहीं रहे हैं, बट स्लोली उस पर कुछ बिल्ड कर रहे हैं, जो जैसे बोलते हैं ना, what do you call in our general language also na, when people slowly increase their border and take land and then it eventually assume that it becomes there. So वैसा ही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड देन नेक्स्ट इज़ इंडिया चाइना बॉर्डर कन्फ्लिक्ट में. तो ये दिस अरुणाचल प्रदेश का इशू, या जो यू नो कश्मीर के एरिया में सियाचिन अक्साई चीन वहाँ पे है, या जो नेपाल के साथ हम आगे पढ़ेंगे जो इश्यूज़ है, उस सब में आप देखोगे व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ चाइना.
China wants to encircle India because, I mean, from the point of view of its security threat, अगर चाइना ऐसा अज्यूम करता है that the only security threat or only worthy opponent of in the world is US, then India becomes another sort of a bigger threat because it's a huge country, very powerful, democratic, just like US. And even though India has followed NAM and has been independent in that way, it is obviously more culturally or politically close to US than it is to China, right? So in a way, it's sort of trying to see from security point of view as well as from trade point of view, trying to encircle China by creating these small areas of trade and military bases. Okay, and this theory is essentially called the China string of pearl. So हमने देखा already, we have studied how with Pakistan it's creating this way. And यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है. फिर then we recently we're going to study it again when we study Sri Lanka, Haman Tota port. And then there's one here in Myanmar, and then China का खुद का जो है हनियान आइलैंड, उस पे जो पोर्ट है. तो आप देखो कि हर तीनों चारों साइड से what they are trying to do is they're trying to encircle India. अच्छा, अब encircle किस तरीके से कि देखो, although these are not China's own territories, but it is creating a trade base there. एंड अपने ट्रेड बेस को सिक्योर करने के लिए वो वहाँ पे अपना मिलिट्री बेस भी बनाएगा. ऑब्वियस सी बात है. अगर इफ़ इट हैज़ सो मच इंटरेस्ट इन दिस ग्वादर पोर्ट, इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ सिक्योरिटी also, right? It's going to make sure that these ports are secure. So it will have its submarines and warships and military bases and air bases. अब अगर यहाँ पे एक बेस बन गया, यहाँ पे एक बेस बन गया, यहाँ पे एक बेस बन गया, ठीक है, और ये तो है ही मेनलैंड पूरा. सो यू सी, इफ एवर इंडिया एंड चाइना आर टू फाइट, okay, there are so many areas from where India will have to fight China. समझ रहे हो आप? क्योंकि वही है ना कि इंडिया आर्मी भले कितनी भी अच्छी हो या चाइनीज आर्मी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट मल्टीपल फ्रंट्स ऑफ वॉर, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू फाइट एंड इट वीकन्स. एक साइड से हो तो आप लड़ सकते हो. लाइक अब देखो जर्मनी, व्हाई डिड जर्मनी लूज इन वर्ल्ड वॉर 2? अगेन बिकॉज दे वर फाइटिंग फॉर. ये तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है ना कि एक अगर मल्टीपल साइड से फाइट हो रही है तो उसमें हमारी जो कितनी भी स्ट्रॉन्ग आर्मी हो वो बट जाती है, हमारी स्ट्रेटजी बट जाती है. तो इस तरीके से इट्स बेसिकली दिस आइडिया दैट China is trying to encircle India with, trying to curb its trade and also threaten its national security. So the string of pearl is a strategy deployed by China, building network of commercial and military bases and ports in many countries. This strategy has been deployed by China to protect its trade interest, and major chunk of its trade passes through Indian Ocean. क्योंकि major chunk of its trade जो है था वो यहीं से पास होता है इसलिए, and so on. So it's in a way it's like now China has two, instead of having one way from which अभी तक क्या हो रहा था, शंघाई पोर्ट है यहाँ पे, यहाँ से ही सारा ट्रेड जो है चाइना का जाता था, पर अब वो क्या कर रहा है, वो उसको डाइवर्सिफाई कर रहा है. तो अब चाइना अगर यहाँ पे है तो इन तरीके से यहाँ जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो यहाँ से चला जाएगा, और यहाँ जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो यहाँ से चला जाएगा. ठीक है, तो इन अ वे अगर कोई चाइना को कोशिश करता है लड़ने की, तो इट विल ट्राई टू पुट प्रेशर ऑन इट्स ट्रेड. एंड नाउ चाइना विल हैव टू वेज, कि एक नहीं दो रास्ते हैं जिससे वो ट्रेड कर रहा है. एंड हैविंग द मिलिट्री बेसिस ऑल्सो मेक्स इट मोर सिक्योर फॉर हिम. सो इट्स अ ब्रिलियंट स्ट्रेटजी, and it sort of curbs India's strength also in a way to fight with China. Moving on, impact of string of pearls on India. So it endangers India's maritime security. Their presence will pose a threat to India's security. As I said कि अगर चारों तरफ चाइना के military base हैं तो it is going to threaten India's national security. Impact on India's economy. Indian resources will be diverted towards defense and security. अब देखो, अभी तक हमने देखा है कि एक
एक फिक्स परसेंटेज होता है इंडिया की जो अर्निंग होती है उसका, वो जाता है या कुछ मिलिट्री की तरफ, कुछ हेल्थ की तरफ, कुछ एजुकेशन की तरफ, राइट. अब अगर चाइना के बेसिस चारों तरफ बन जाएंगे एंड अब ऑफ कोर्स एज देयर हैज़ नेवर बीन गुड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना विद फ्रॉम दैट एस्पेक्ट, इंडिया विल हैव टू मैच इट, right, in order to, you know, keep up with it so that its national security is not threatened. That means what? It will have to push more money towards military than, and take away from these important aspects like agriculture, transport, एजुकेशन, हेल्थ. इस तरफ से पैसे हटा के सारे मिलिट्री में डालने पड़ेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, राइट. एंड व्हाट दिस डज इज़ it might make India strong from military aspect, but it will make it weaker from all other aspects. So it is important that all aspects of a country are developing in equal way, because अगर अब जैसे ऐसा होता है कि India starts putting more money in military and less in education, there's going to be uproar from the people, right. कि अभी तक भी हम अपने literacy mark पे नहीं पहुंच पाए हैं, we still have a very shabby medical facilities, गवर्नमेंट मेडिकल फैसिलिटीज़, और उस पर आप उनका पैसा काट के मिलिट्री पे लगा रहे हो. इट्स गोइंग टू क्रिएट इंटरनल क्या बोलते हैं डिस्टर्बेंसेज इनसाइड इन द पीस एंड prosperity of the nation. So एक तरीके से it's not only affecting India's defense, but also affecting how India functions internally, how it will affect the internal politics of the country by affecting trade. Next, the strategic stronghold of India, which it enjoys today in the Indian Ocean. अब Indian Ocean में अभी तक इंडिया का बहुत अच्छा कंट्रोल था, strategic कंट्रोल था, and the more China comes to Indian Ocean, the less India's control will be in that area, right. तो एक अभी तक नहीं थी, अब होने लगेगी competition. String of pearl will lead to China surrounding India and dominated countries that today consider India as a partner against China will lose. अब क्या होता है ना, जैसा कि हमने बोला कि अगर even though China and India have whatever their relationship is, India is in ideology more close to US than it is to China, right, political ideology especially. तो द आइडिया इज़ दैट अगर चाइना बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने लगेगा इंडियन ओशन को, तो क्या होगा कि जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं दैट हैव बीन द नेबर्स ऑफ इंडिया एंड अदर कंट्रीज दैट हैव बीन डिपेंडेंट ऑन इंडिया टू स्टैंड अगेंस्ट चाइना विल लूज होप और ट्रस्ट इन इंडिया कि वो हमें चाइना के अगेंस्ट अगर हमें कभी खड़ा होना पड़ा तो इट विल. लाइक फॉर एग्जांपल नेपाल है, अभी वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नेपाल आगे, कि नेपाल का रिश्ता इंडिया से कुछ इस तरीके का है दैट इट वर्क्स एज अ बफर अगेंस्ट चाइना. तो इंडिया का रिलेशनशिप नेपाल से बहुत अच्छा है इस मामले में, क्योंकि वी बोथ हैव something to gain from that relationship, both Nepal and India, because it's a landlocked country, 3 sides is connected from India, and the idea that they have had culturally and historically quite common grounds. तो उसमें क्या होता है कि अब नेपाल अपनी सिक्योरिटी के लिए कहीं हद तक इंडिया पे डिपेंडेंट है, बट अगर इंडिया वीक हो जाता है चाइना के सामने इस तरीके से, तो देन नेपाल विल हैव टू ऑल्सो find something else, some other grounding to be independent, right. So this is just an example. ऐसे ही दूसरी कंट्रीज़ भी है जो इंडिया में काफ़ी ट्रस्ट करती है कि वो चाइना के अगेंस्ट खड़ा रहेगा अगर कभी ऐसा वॉर का सिचुएशन आता है. तो अगर चाइना इफ़ इट थ्रेटन्स इंडियाज़ position in South China, in Indian Ocean, or generally, it will also ruin the leverage India has with other countries right now. So this is on a larger scale. So it doesn't just affect India's national security, but it also affects its internal politics, its trade, economic standing. It affects its strategic partnership and alliances with other countries. So it has a larger impact on India. That's why we are discussing it in such a depth, or why it is taken so seriously. Okay, so let's move on. China supports Pakistan and the construction of Gwadar port. Obviously China is supporting that. China may develop a overseas naval bases in Gwadar port. So one of the concern is again कि वहाँ पे अगर चाइना अपना इतना सारा ट्रेड वहाँ डाइवर्ट करेगा तो वहाँ पे पोर्ट भी बनाएगा, and this will conduct
एक्सपेडिशनरी वॉर इन इंडियन ओशन. तो अब ऑफ कोर्स वहाँ पे नेवल बेस है तो प्रैक्टिसेस भी करेंगे, और प्रैक्टिसेस करेंगे तो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, एंड इट्स टू क्लोज टू इंडियाज़ बॉर्डर. ठीक है, तो जितना ज़्यादा क्लोज है उतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है. तो इस तरीके से दिस इज़ हाउ दे अफेक्ट. फ्रॉम ईस्ट द डीप वाटर पोर्ट ऑफ म्यांमार, it is created some risk, almost same risk as Gwadar. China's anti-piracy naval deployment in the Indian Ocean began in December 2008, and ensuing acquisition of the first overseas military in Djibouti in August 2007. So it's not, देखो एक नहीं है इसका एग्जाम्पल, आप देख सकते हो कि अलग अलग जगह पे it is quite evident that it is not just something they're doing to extend their trade, but you can see that military strategic भी वो करने लग गए हैं चीज. so they are also creating military bases in different countries, and this is not something which is बोलते हैं ना कि ऐसा नहीं कि बाहर से ऐसा दिख रहा है कि वो ट्रेड के लिए कर रही हैं, लेकिन अंदर दे आर क्वाइट ओपन अबाउट द फैक्ट दैट दे आर डूइंग इट फ्रॉम अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू. सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स. This makes it easy for you to answer the question that why China's interest in these countries around in India's neighbor becomes such a threat for India. Moving on, so this is what we have covered. So this is it for India, China, and border issues. We're going to move on to the other nations, and today we are going to mainly talk about Kathmandu, Nepal. Kathmandu being its capital. Again, the normal information that we must know about countries I have put here in juxtaposition with, Bhutan and Myanmar, so that we are able to understand कि उनकी density कितनी है ना, कौन कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है, और कितना dense है population के हिसाब से. We can also see here, देखो again, unitary, federal. ठीक है, we have discussed this in the last class also कि it is important to understand कैसी है. तो of course Bhutan and Myanmar both are in, but Nepal says that it's a federal parliamentary. ठीक है, उसके बाद इंडिपेंडेंट. अच्छा, एक चीज़ है यहाँ पे कि मोनार्की, और यहाँ पे है मिलिट्री जनता. ठीक है, एंड देन अगेन इट्स अ रिपब्लिक हियर. उसके अलावा आप देखोगे कि बोथ भूटान एंड नेपाल आर पार्लियामेंट्री, whereas it's a independent republic assembly. So pretty similar, but Myanmar has had a history of military rule. So when we talk about Myanmar in next class, we will go in depth ki how does it affects how does Myanmar having a military occupation in a way affects us and our relationship with other countries in that, for that matter. So this gives us a good comparison between these three countries that are our neighbors. We are going to focus mainly on Nepal. So as I said initially also in last classes also, that if you ever want to understand कि दो countries के बीच में कैसी relationship रही है, you pick up the news of last 1 year and see what's being discussed, what is happening between them, and it will give you a very nice clear idea of कि abhi kya situation. Again, we are not going into India and Nepal has a very thick past where we have had we have fought together in independence war. We have had so much cooperation that it almost felt like, people mazak mein kabhi kehte hain ki Nepal is just like a part of India, and well, I don't think that we should say that even jokingly, because अगर हम किसी नेशन की सोवर्निटी को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, राइट? सो बट इतने अच्छे रिश्ते हैं कि इवन मतलब आप यू कैन लिटरली जस्ट हैव अ आधार कार्ड एंड वॉक इनटू Nepal, or even you can use your own currency. Recently, I think the most recent news about Pakistan is the crash, the airplane crash, and it was really horrific. And I remember watching the video. I try to avoid watching such things because it really affects me, but I did not know what I was watching, and I ended up watching the video of 5 people Indian descent who were in the plane, and just we are not going to talk about it now. It's quite sad, and
And this we can understand this in a larger context, that Nepal is a very treacherous geographical land. It has Mount Everest. It has most tallest mountain peaks of Himalayas in it. And we saw the bhukamp, the earthquake that happened, and it destroyed so much. I mean, I remember seeing the pictures. So from that point of view, Nepal has had quite a reputation with respect to natural disasters. And we know that planes especially have a lot of difficulty and increase crash probability in mountain regions. So it's quite sad, and this was one of the news that was there. We'll move on to some other political news. So one is Prime Minister Modi visited Lumbini on Buddha Purnima. So last year, again, religiously, Nepal is also very important because India has a huge percentage of Buddhist minority, and Nepal is where Nepal also has one of the most important landmarks in that culture. So from that point of view, also becomes very very important. And India will have to monitor development in Kathmandu, foreign policy experts in Nepal. तो एक इससे हमें क्या पता चलता है कि एक ट्रांसनेशनल रिलेशनशिप है इंडिया और नेपाल के बीच में. यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि इंडिया मॉनिटर कर रहा है काठमांडू का डेवलपमेंट. सो न्यू गवर्नमेंट जो आई है नेपाल में, इंडिया इज कीपिंग, सो दैट मीन्स इंडिया कीप्स अ क्लोज आई टू व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड ऑफ नेपाल. Then Nepal's power sector fears it will lose competitive advantage due to India's new policy. So again we understand कि अच्छा यहाँ हम देख रहे हैं कि कितना बढ़िया रिश्ता है, और फिर देख रहे हैं कि इंडिया कितना इंटरेस्ट ले रहा है उसकी इंटरनल पॉलिसी में. नेक्स्ट न्यूज़ हम क्या देख रहे हैं कि देयर इज़ अ फियर दैट इंडिया का जो एडवांटेज मिलता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, वो चला जाएगा इंडिया की न्यू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से. सो क्लियरली देर आर इशूज, अगेन सेम एज बांग्लादेश. वी सॉ दीज कंट्रीज आर सो क्लोज, बट एट द सेम टाइम दैट डजंट मीन कि everything is hunky dory and everything is going to be okay, because even if they are very close, even if they have very good relationship, when it comes to national interests, countries will fight. So clearly we know that even though even though their relationship is okay, there are definitely some areas of concern. Nepal says it's making an effort to activate SAARC. So इससे दो चीज़ें पता चलती है कि there is something which is making Nepal wants SAARC, and second thing we know is that SAARC is dead. ठीक है, इस न्यूज़ आर्टिकल से हमें दो चीज़ें पता चलती है. सो नाउ वी इससे पढ़ के आपको कुछ तो आइडिया लगा होगा कि व्हाट इज़ हैपनिंग बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. सो लेट्स मूव ऑन एंड अंडरस्टैंड the historical connection between India and Nepal. So again, as I said in the starting of this lecture, we are not discussing the entirety of India-Nepal relationship. We are just going to talk about its one of the issues from one particular lens of security. But we're quickly going to understand ki Nepal, where it stands. So we see Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar and Sikkim. चार जो है एरियाज़, मतलब 3 साइड से इंडिया है, 1 साइड से चाइना है, और उसमें ये स्टेट्स हैं. इवन दो देर इज़ नो बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड भूटान, नेपाल एंड बांग्लादेश, बट दे आर स्टिल नेबर्स एंड दे वेरी क्लोज in that, and it's something of quite an importance for India. So historically independence struggle में नेपाल के कई लोगों ने कई warriors ने हमारा साथ दिया था, to the point where it is often said that there was a misconception कि लोग expect कर रहे थे कि India will also call Nepal to join India after independence. But the relationship between India and the relationship between Britain and India and British Raj and Nepal was very different, and hence it was an independent country. So geographical unity, ये पूरा हमें पता है कि this is all Himalaya. Okay, so there is sort of like this cultural geographical unity in a way कि एक बोलते हैं ना, एक तरीके की सिमिलैरिटी है, बिकॉज दे हैव ऑल हैड सिमिलर जोग्राफिकल यूनिट. जैसा कि हमने बांग्लादेश में भी देखा था कि बांग्लादेश के दैट साइड पे वो हार्ट्स बने थे, बिकॉज कल्चरली बहुत पोरस है. वैसे ही यहाँ पे भी सेम इशू है, बिकॉज दिस इज़ अ कंबाइन एरिया, फुट हिल्स ऑफ नेपाल. सो दैट्स वाई देयर इज जोग्राफिकल यूनिटी. कल्चरल, रिलीजन, हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू लैंग्वेज ऑल्सो वेरी सिमिलर. काफ़ी पॉलिटिकली
देखा जाए तो वहाँ पे इंडिया और नेपाल पॉलिटिकली भी इंटरनल पॉलिटिक्स में काफ़ी सिमिलर है आइडियोलॉजी फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यू नो democracy and religion and all of those things, even though there is significant difference because it's one of the countries that gives Hinduism like a identity of Hinduism in its politics. But wo bhi theek hai, economic 70% of Nepal's economic trade is dependent on India. So because it's a landlocked country and because of very good relationship between India and Pakistan, there's a what we call it as roti beti ka rishta, which is essentially there are people getting married into the countries and people come here to earn money. India has in their relationship forgiven the privilege of Indians working in Nepal's administration, but Nepalis can still work in India's in certain sectors of India's government. And of course it makes sense because it's a small countries, and if you know all of the Indians try to start working in Nepal's government, that will become very difficult. So a transnational relationship, which is people to people, हमने transnational relationship बांग्लादेश के time में भी पढ़ा था. It's that when entities which are not state have a relationship, so trade relationship, economic and family relationship, or NGOs, these small institutions have relationship with themselves independently of the state, that those are called transnational relationship, or more of a part of it is also people to people. So we know in Pakistan, in Nepal and India, people to people relationship बहुत strong है. Moving on to the border issue. So again, the condensation of the whole thing comes to the idea कि रिश्ता तो बहुत बढ़िया है, but contention कहाँ है? So one of the main disputed region is Kalapani region. So we're going to understand कि वहाँ पे क्या हो रहा है. So both India and Nepal claim that that land. So this is the border issue. Basically, we are also going to understand within this border issue, within the border issue of Kalapani, we are going to understand Nepal's economic dependence on India, the big brother and small nation syndrome that both the countries have, and Nepal's role in India-China security tussle. So, एक तरीके से ये एक dispute, एक land dispute has all these things in it. कि there is political aspect also, there is the small nation syndrome, big brother issues. There is also this very dispute also plays a huge role in India's security with respect to China. So all of this comes from this one small land. Let's understand it. So Kalapani is located in the easternmost corner of Uttarakhand. ये यहाँ पे उत्तराखंड है. This is Nepal and this is China, and this is a small area. ठीक है. It shares border with in the north with Tibetan autonomous region. तो यहाँ पे आता है Tibet. Then at least this is 37,000 hectares of land in high Himalayas. So ये वाला disputed area जिसको बोल रहे हैं. And Kalapani region derives its name from the river Kali. ठीक है. Moving on, Nepal claims to this region is based on the Treaty of Sugali, which basically so Britishers और नेपाल के बीच में एक treaty हुई थी जिसमें बोला गया था कि Britishers said or assigned this agreement that जो ये river है that will be the border of Nepal's kingdom. Okay, so basically treaty जो है sign की गई थी between Gurkha rulers of Kathmandu and the East India Company after the Anglo-Nepal War, and the treaty was ratified in 1867. इसके हिसाब से काली river जो है, so this river, this is the border of Nepal. ठीक है, that's what they are saying. अब प्रॉब्लम क्या है? नेपाल claims that east of this Kali river should begin at the source of the river. अब essentially treaty में क्या लिखा हुआ है कि ये river के इस तरफ जो है ये सारा इस river के इस तरफ नेपाल है. ठीक है. अब what नेपाल is saying कि actually जो ये river है ना ये यहाँ से पैदा होती है, क्योंकि according to जो सिग्नेचर हुआ था ट्रीटी में वो ये बोला गया था कि जहाँ से ये रिवर स्टार्ट होती है वहाँ से गोरखालैंड चालू होता है. तो एक्चुअली यहाँ वो बोल रहे हैं कि यहाँ से होती है और इंडिया बोल रहा है कि नहीं, ये जो रिवर है ये है, इसके इस तरफ वाली आपकी है, इसके इस तरफ वाली हमारी है, ख़त्म बात. अब प्रॉब्लम क्या है इसमें
India says that border begins at Kalapani, which India says is where the river begins, and there is a varying interpretation. अब नदियाँ जो होती है ना बड़ी वो होती है, स्पेशली पहाड़ी इलाके में, कहाँ से निकली, कहाँ छूट गई, कहाँ अलग हो गई, इट्स नॉट अ वेरी डिफाइंड, क्या कह सकते हैं ना कि नदियाँ अपना बदलती रहती है रास्ता, सो इट्स नॉट समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग टू बेस योर टेरिटरी ऑन. बट अभी तक ये एक्सपेक्टेड था कि भाई ये जो है दिस वॉज नेपाल एंड दिस वॉज इंडिया. अब वो बोल रहा है कि नहीं, एक्चुअली ये नदी जो है वो यहाँ से बहती है, इसका स्टार्टिंग, तो आप हमें ये पूरा एरिया दे दो. मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है बेसिकली इस ट्रीटी का. नेपाल पब्लिश द रिवाइज ऑफिशियल मैप. अच्छा, अब हो क्या रहा है, आई टेल यू इन वेरी क्विक अंडरस्टैंडिंग. देखो, स्मॉल नेशन सिंड्रोम जिसकी हम बात कर रहे थे, देर इज़ टू मच डिपेंडेंस ऑफ नेपाल ऑन इंडिया. सो ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ दैट डिपेंडेंस कई लोगों को ऐसा लगता है कि इंडिया बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता है नेपाल के पॉलिटिकल इंटरनल पॉलिटिक्स में. ऑफ कोर्स देयर आर गोइंग टू बी सम वॉइसेस विच आर अगेंस्ट दैट, राइट. ऑब्वियसली बात है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कंट्री हमारे पे बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है, तो कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि नहीं, इंडिया का इतना इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए. तो अब हो क्या रहा है कि नेपाल की इंटरनल पॉलिटिक्स में एक टसल है, जहाँ लड़ने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के लिए एक स्केपगोट बना रहे हैं, विच बिकम्स इंडिया. ठीक है, तो अब उन्होंने नया मैप जो रिवाइज किया लास्ट ईयर, शर्मा ओली जो है, केपी शर्मा ओली, उन्होंने ये नया जो है अमेंडमेंट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में और कहा कि ये नेपाल का पार्ट है, और क्या बोलते हैं, नए मैप में इस टेरिटरी को इनकॉर्पोरेट कर दिया. इंडिया हैज़ कंस्ट्रक्टेड लीपू लेक पास. अब हो क्या रहा है कि लीपू लेक यहाँ पे बनाया है, लीपू लेक पास, ठीक है, इस एरिया पे. ओके, अब वो हो क्या रहा है, चाइना हैज़ रिकॉग्नाइज कि हाँ ये रीजन जो है ये इंडिया का है. तो अब ऑफकोर्स अपना रीजन है, चाइना ने भी रिकॉग्नाइज किया, तो इंडिया इज़ मेकिंग रोड्स ऑन इट, राइट. सो इट हैज़ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस. अब ये एरिया जो है ना स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज यहाँ दिस इज़ द मीटिंग पॉइंट ऑफ नेपाल, इंडिया एंड चाइना. अब वो एरिया स्ट्रेटेजिकली फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अगर वो आपका अभी इंडिया और चाइना के बीच में इतना झगड़ा है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बॉर्डर पे जो हो सिक्योरिटी हो. तो अब ऑफकोर्स इंडिया इज, और जो ये जो पास है, अंडर पास जो बनाया गया है, दिस इज़ वेरी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट वहाँ से नॉट ओनली ईजिली सिविलियंस एंड मिलिट्री कैन गो, बट इट ऑल्सो हैज़ अ importance in religious importance. In Mansarovar, it is the shortest way possible to reach this area. So it's not just important from civilian and military point of view, but also religious point of view. अब आर्मी चीफ जो है वो इंडिया के, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये नेपाल का खुद का ज्ञान नहीं है, ये खुद से नहीं आया है, ये कोई और उंगली कर रहा है कि ये हमारा लैंड है, ताकि डिस्टर्बेंसेज हो. Nepal has always have some voices against India's alleged interference in internal politics. There has always been some people in Nepal saying कि India बहुत ज़्यादा influence करता है नेपाल को. अब what we know, हमने ये पहली बार नहीं देखा है कि countries advantage लेने के लिए वो करवाती है, कंट्रीज़ के रिलीजियस पार्टी, रिलीजियस या फिर इन एनी वे डिफरेंट सेक्ट्स के बीच में झगड़ा करवाती है. ये हमने देखा है, पहले भी होता है, ब्रिटिशर्स भी करते थे, पाकिस्तान भी कर रहा है, सब जगह होता है ये. व्हाट इंडिया फियर्स इज़ कि नेपाल और इंडिया का रिलेशनशिप इतना बढ़िया था, और अब जब इसमें ये खोट आ रही है, तो ये अपने आप नहीं आ रही है, चाइना कुछ कर रहा है. ओके, एंड अब इंडिया, अब इसमें नेपाल क्या कह रहा है, नेपाल ये बोल रहा है कि देखो हम तो ट्रीटी के हिसाब से बोल रहे हैं, ट्रीटी बोलता है नदी किस तरफ हमारी है, तो ये हमारा रीजन है, ख़त्म बात. और लोग बोल रहे हैं नेपाल में कि देखो क्यों लड़ रहे हो, मतलब नेपाल इज़ बिकमिंग ब्रिंगिंग चाइना एंड इंडिया टुगेदर बाय बिकमिंग अ ब्रिज बिटवीन दीज टू पावरफुल नेचर. तो दे आर ट्राइंग टू बी मोर सेंट्रलिस्ट, बिकॉज उनको पता है दोनों कंट्रीज़ के अगेंस्ट तो लड़ नहीं सकते. सो दिस एसेंशली इज़ द मेन कंटेंशन बिटवीन दीज टू कंट्रीज़. देर इज़ शक हो रहा है बहुत लोगों को, इंडिया को बहुत शक हो रहा है कि जो मोटिवेशन है नेपाल का, ये चाइना से आया है. नेपाल के इंटरनल में दो वॉइसेस हैं, एक चाइना इंडिया को स्केपगोट बनाना चाहता है, और एक बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, हम तो आपके साथ ही हैं, ये तो बस जस्ट बिकॉज. एंड इंडिया के लिए ये जगह जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज चाइना से हमारा जिस तरीके का झगड़ा है. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि क्यों हमने ये किया और किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ आ रहे हैं, एंड वाई दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट.
That's it for today. Thank you very much for joining. I hope this was clear. In the next class, we are going to learn about other issues in with respect to Nepal, Bhutan, and Myanmar. Uh, if you have any questions, please comment, and I will answer it in the next class. Have a nice day. Thank you.